अस्सलाम वालेकुम। NNI न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज की खबरों पर नजर डालते हैं। जी, अनुमति से उठाए जाने वाले प्रश्न। डॉक्टर मेघा विश्राम कुलकर्णी। डॉक्टर मेघा। नमस्ते सर, नमस्ते। This is regarding rising road accidents in Pune. I rise to draw the attention of this August House to the alarming rise in road accidents in Pune city. In 2024, Pune recorded 1,400 road accidents, resulting 320 fatalities. Also, the total number of road accidents has increased as compared to the previous year. In 2024, 174 two-wheeler riders lost their lives in road accidents due to rash driving, overspeeding, and non-compliance of norms. Now there are 25 pro-accident zones identified by Pune Police. Several factors contribute to this crisis, including poor road conditions, obstacles of ongoing construction work, illegal encroachments, reckless driving, overspeeding, drunk driving, triple seat or even four-seat riding on two-wheelers, driving on footpaths, lack of enforcement of traffic, etc. The Bombay High Court has already taken note of Pune's worsening traffic conditions and directed Pune Commissioner to take corrective measures. The Police Commissioner and Pune Municipal Commissioner have initiated steps to address traffic congestion and improve road safety. However, the rising number of accidents indicates that more urgent and stricter action is required. In one place near Wagholi, a drunk dumper driver crushed 9 workers who were sleeping on footpath. On Gangadham Road, a dumper crushed a lady who was going on a two-wheeler. You all must be knowing about Porsche car accident done by a drunk teenager car driver in the midnight. Food delivery boy was crushed in another such accident. The truck, which was coming from a wrong side, crushed many lives. School-going children, senior citizens, pedestrians, office-going persons using two-wheelers. No one is safe on Pune's roads. My opinion is stricter action is required to prevent further loss of lives. For that, deployment of more traffic personnel and an AI-based CCTV surveillance at accident-prone zones, improvement of road conditions and completion of construction work in a time-bound manner, intensified actions against violation of rules, launching of extensive public awareness campaign, implementation of harsher penalties, all is required, sir. Honorable Chairman, sir, I request the government to prioritize road safety and take immediate corrective measures to prevent further loss of innocent lives. Thank you, sir. धन्यवाद कुलकर्णी जी। डॉक्टर फौजिया खान, concern over rising of Guillain-Barré syndrome cases in Maharashtra. Thank you, sir. So I bring to the attention of this House the alarming surge in Guillain-Barré syndrome cases in Maharashtra. As per the latest reports, the state has recorded 163 cases, suspected cases, with 127 confirmed and 28 patients requiring ventilator support. This sharp rise to a failure in the public health response exposes gaps in disease surveillance, timely diagnosis, and medical preparedness. The state government has failed to take swift action. Hospitals remain inadequately equipped with essential medicines like immunoglobulin therapy, ventilator shortages persist in district healthcare hospitals. Sir, the absence of a coordinated response from municipal and state health authorities has left patients, particularly from rural and economically weaker backgrounds, struggling for treatment. It is unacceptable that Maharashtra, one of the most developed states of the country, continues to witness such lapses in public health infrastructure. Sir, city administrations have neither conducted adequate awareness camps nor implemented proactive measures to prevent the spread of this disorder. The failure to act decisively has aggravated the crisis, leaving affected families in distress, sir.
I urge the union government to intervene immediately by, number one, deploying a central medical response team to assess and manage the outbreak. Number two, ensuring the immediate supply of medicines, ventilators, and critical care support. Number three, providing financial aid to affected families and initiating free treatment programs for those in need. Next, sir, conducting an independent audit of the public health response of Maharashtra and holding those responsible accountable. Strengthening disease surveillance to prevent future outbreaks. This crisis demands immediate action. The inaction of the state government has already endangered lives, and further delay will only worsen the situation. I call upon the Union Health Ministry to take urgent steps to contain this outbreak and ensure that such negligence is not repeated. Thank you, sir. धन्यवाद डॉक्टर फौजिया खान जी। श्री धैर्यशील मोहन पाटिल, demand to establish skill development centers for comprehensive industrial development of Rajya district. धैर्यशील पाटिल नहीं है? Not present, sir. Not present. Shri Sanjeev Arora, need to address the problems faced by bicycle manufacturing sector. Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to draw the attention of the government towards most healthy, environment-friendly, meant for masses transportation bicycles. The industry is going through some tough times, and some issues need to be addressed by concerned ministries at the earliest possible. So, uniform GST on bicycle and bicycle parts. Currently, bicycle parts attract 18% GST, non-electric bicycles attract 12%, and electric bicycles attract 5%. The fragmented GST structure burdens manufacturers, discourages domestic production, and creates unnecessarily financial hurdles. A uniform GST rate of 5% is required to support the growth of this environment sustainable mode of transport. Cycles meant for handicapped should be made GST free. This rates needs to be applicable from parts to the final production. Renewal of Bicycle Development Council. The renewal of BDC under DPIIT Ministry of Commerce has been pending since 2021. This interministerial body plays a vital role in coordinating efforts among ministries and manufacturers to strengthen the bicycle industry. The delay in renewal of this body is hampering strategic growth and innovation of this sector. As already mentioned, bicycles are crucial not only as an affordable means of transport, but also in advancing our sustainability and health objectives. I urge the concerned ministries to address these issues urgently, streamline projects, and facilitate the industry's growth for the benefit of the Commonwealth and the nation as a whole. Thank you, sir. धन्यवाद अरोड़ा साहब। श्री मनोज कुमार झा, concern over rising of income inequality and weakening of social welfare programs. शुक्रिया माननीय वाइस चेयरमैन साहब, बेहद खुशी की बात है। धन्यवाद आपका कि ये मौका मिला, और धन्यवाद इसलिए भी कि माननीय वित्त मंत्री भी हमारे समक्ष मौजूद हैं। ये अगर मैं सदन में बीते कुछ वर्षों में इस प्रश्न को हमने लगातार उठाया है, और ये प्रश्न महोदय सिर्फ मेरा नहीं है। आय की असमानता हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर रही है। खास तौर पर अगर मैं कहूं कि अरबपति खरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसके ठीक बरक्स जो शार्प डिक्लाइन है मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, और खास करके जो असंगठित क्षेत्र का मामला है, तो महोदय मेरा सिर्फ आपके माध्यम से अपनी सरकार से ये भी कहना है कि कोविड के पश्चात इस प्रक्रिया में और भी तेजी आई है आय के असमान वितरण के प्रश्न पर।
एक जो शेप है इकोनॉमी का, उसमें एक प्रभु वर्ग जिसे हम एलीट कहते हैं, प्रभु वर्ग की आय में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उसके अनुपात अगर आप देखें तो एक जो सामान्य हाशिए के समूह हैं या जो हमारा वर्किंग क्लास है, उसकी आय में लगातार इस प्रकार की गिरावट देखी जा रही है जो चिंता का विषय है। महोदय, आय का असमान वितरण सिर्फ इकोनॉमी को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि सोशल स्टेबिलिटी को भी प्रभावित करता है, वो डेमोक्रेसी को भी प्रभावित करता है। क्योंकि सर, हम सब कहीं ना कहीं पाते हैं कि जब पूंजी का संकेंद्रण होता है तो पूंजी राजनीति को भी निर्धारित करने लगती है, और राजनीति को जब पूंजी निर्धारित करती है तो मैं समझता हूं उससे निकलना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। महोदय, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आय के असमान वितरण का स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी असर पड़ता है, शिक्षा पर असर पड़ता है। मैं आगाह करता रहा हूं सदन को सर, माननीय सभापति महोदय, कि अगर हमने इसके लिए कठोर और तात्कालिक फैसले नहीं लिए तो हम एक ज्वालामुखी की ढेर पर बैठे हुए हैं। आखिर में मैं कहूंगा कि आर्टिकल 38 और 39 को, खास करके 39 क्लॉज सी, that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. That's my request to you and to the government. Thank you very much, sir. धन्यवाद प्रोफेसर साहब। श्री हरीश वीरन demand to provide funds for the research and development of law ASMA. Thank you, Vice Chairman, sir. क्या लग रहा है? Sir, I wish to draw the attention of this august House to the sufferings of the patients affected by spinal muscular atrophy, which I call as SMA. Sir, this SMA is a very rare genetic disorder that affects the nerve cells in the spinal cord. Now, this is diagnosed in infancy before 6 months itself. Now, if it is not treated, this is the main cause of death. Now, the estimate statistics is that almost 8,000 to 25,000 people are affected by SMA every year in India. Now, there is one positive news, which is that there are treatments which can actually manage SMA. There is no cure. 3 types of treatment are there, sir. One is the gene therapy for infants below 2 years. Second is an injection, and third is a molecule therapy. But the negative aspect is that this is highly exorbitantly priced. The gene therapy costs around 17 crores. That is the cost of the gene therapy medicine. The molecule therapy medicine costs around 6.2 lakh rupees per bottle, and around 30 bottles are required per year. So nobody can afford this. Now, therefore, my suggestion to this august House, the Ministry of Health and Family Welfare should intervene urgently. Now, sir, the experts have suggested that local production of these medicines, of generic drug of these medicines, is possible, and Indian pharmaceutical companies, as we all know, are in a very, very good shape to produce these kind of generic medicines. For production of generic medicine, what has to happen is that under the Patents Act, there is Section 100. You have to give exemption so that these particular generic medicines can be produced in India. Now, the experts say that if generic medicine is produced, this medicine which costs 6.2 lakhs for one bottle can be produced for rupees 3,063. That is the difference, sir, if a generic drug is produced in India. For that, the DPI, sir, I have to refer to the National Policy for Rare Diseases 2021, which actually stipulates that there is a policy by the Government of India that in the cases of rare diseases, local manufacture of medicines are allowed. So you have to invoke the national policy so that the local production of generic medicines are allowed. Now, 2 more things, sir. One is that there has to be a registry as far as the SMA patients are concerned. Now, what is happening is that, sir, it is crowdfunding and crowdfunding alone which will survive these patients. But crowdfunding alone cannot survive these patients. So there has to be an SMA registry. So till the time there is local production of medicines, you have to subsidize the medicines for these patients. Or else you have to make this customs duty free for all these medicines so that at least there is
3 मिनट का समय है, कृपया समाप्त। हरी जी धन्यवाद। श्री संजय कुमार झा, डिमांड टू रीनेम दरभंगा एयरपोर्ट एज कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान स्कीम का देश का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है और ये प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना थी कि उड़ान स्कीम में जो छोटे एयरपोर्ट है उसको डेवलप करना और इतनी बड़ी संख्या में लोग अब वहाँ से भी ट्रैवल करते हैं। और इसी तरह वित्त मंत्री जी ने इस बार के बजट में भी 10 साल इसको एक्सटेंड कर दिया है और 100 और नए जगह को टेकअप करने की बात है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल ये एविएशन सेक्टर में उड़ान स्कीम रहा है। और दरभंगा में हमारे मिथिला में विद्यापति एक बहुत बड़े कवि हुए और जब 2018 में उसका शिलान्यास हो रहा था तो उस समय के तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री गए थे दरभंगा और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी थे और वहाँ पर तय हुआ कि उन्हीं के नाम पर ये एयरपोर्ट होना चाहिए। आदरणीय उपसभापति महोदय, विद्यापति मैथिली, संस्कृत जैसी भाषाओं के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे जिनका योगदान भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। उनकी अस्थायी धरोहर और मिथिला क्षेत्रवासियों के दिलों में उनकी अमिट स्थान है। इस संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 22 दिसंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि कोकिल विद्यापति हवाई अड्डा रखने की अपील की थी। इस संबंध में बिहार विधानसभा और विधान परिषद ने भी मार्च 2021 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि कोकिल विद्यापति हवाई अड्डा रखने की सिफारिश की गई थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को शीघ्र अनुमोदित करके कवि कोकिल विद्यापति जी की अस्थायी धरोहर को सम्मानित करते हुए इस दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति जी के नाम पर किया जाए। धन्यवाद झा साहब, धन्यवाद बहुत। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, डिमांड टू एस्टेब्लिश ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज branch at Bellary, Karnataka. Thank you, Chairman, sir. Sir, I rise to draw attention to the critical issue of mental health care in Karnataka, particularly the shortcomings of the existing National Institute of Mental Health and Neurosciences, that is NIMHANS in Bangalore, and the pressing need for a new branch in Bellary, sir. Sir, NIMHANS Bellary, despite being one of the India's premier mental health institutions, is severely overburdened. The facility handles a disproportionately high volume of patients, like about 12 lakhs annually, sir. With a doctor-patient ratio of 1:1,456, well above the WHO recommended 1:1,000. This strain is particularly felt in the mental health sector, where rural areas contribute significantly to the increasing demand for services, sir. Due to limited specialist human resources and insufficient infrastructure, NIMHANS is struggling to meet the growing mental health needs of Karnataka and also the neighboring states, including Andhra Pradesh and Tamil Nadu. This is according to the report from New Indian Express, sir. Sir, Bellary offers a strategic solution for addressing the mental health crisis in North Karnataka especially. Unlike more distant districts, which are 600 plus kilometers from Bangalore, Bellary is centrally located, making it more accessible for patients from northern districts like Koppal, Raichur, Gadag, Yadgir, Gulbarga, and Hubli. Additionally, Bellari's proximity to Karnataka's mining sectors, which face higher socio-economic stress and mental health challenges, underscores the importance of establishing specialized mental health care in this region, sir. The city also holds promise for addressing unique challenges such as mining-related psychological disorders, which has often led to many suicides in this area. Sir, Bellari's location also offers strategic connectivity to neighboring states, positioned near the Hyderabad-Bangalore economic corridor. Bellary can serve as a vital hub for patients and researchers from regions like Andhra Pradesh, Telangana, and even Maharashtra, sir. This interstate accessibility is crucial for providing mental health services to underserved areas, reducing the burden on Bangalore's NIMHANS and ensuring broader regional reach. Availability of government land and strong transport connectivity makes it an ideal location, sir.
Sir, given these considerations, I urge the Ministry of Health and Family Welfare to prioritize the establishment of a Nimans branch in Ballari, a step that will improve mental health care access for millions across Karnataka and neighboring states. I had even met the Health Minister personally and requested, sir. I hope the Ministry will consider this. Thank you, sir. धन्यवाद नासिर साहब. Shri Dorji Tej Singh Lepcha demand to extend the Sevok Rangnu railway project to Nathula bypass. Honorable Vice Chairman, sir, demand for extension of railway network from Rangpur to Nathula Indo-Tibetan border. Sevok-Rangpur railway line is a line currently under construction to connect the Indian state of West Bengal and Sikkim, and the first phase is expected to be completed by 2027. The Sevok-Rangpur rail line is part of India's border strategy to enhance connectivity in the northeastern region. By linking Sikkim to the national railway network, the project will help integrate the region more closely with the rest of the country, promoting national unity and security. The plan for extend the all-important Sikkim rail link to Nathula will only be a boon to all-weather connectivity. It will aid the armed forces with logistical support in the forward areas. Nathula, a border area with Tibet, is not only a tourism attraction at a height of more than 14,000 feet, but also an avalanche-prone area. At present, road connectivity provides a comfortable travel experiences for tourists and the forces, but all of them depend on favorable weather. I urge upon government to take up completion of all phases of the Sevok-Rangpur rail line till Nathula on priority basis. As once completed, this rail line is expected to have a significant positive impact on the local economy. It will improve transportation efficiency, reduce travel time, and make Sikkim more accessible to tourists and businesses. This, in turn, will lead to increased economic activities and job creation in the region. This will also aid our armed forces with better connectivity. Moreover, it will help integrate the hill people into the mainstream national life, providing full support to entrepreneurial spirit of the region. Thank you. धन्यवाद लेप्चा साहब. Shri Sandeep Kumar Pathak demand to counter hostile drone activity on the India-Pakistan border. Not present. Not present. Shri Sujit Kumar. Shri Sujit Kumar. Thank you, sir. Sir, I wish to draw the attention of the House and the government on an issue which has grave consequences for the public health of our country, particularly of our children and youth. Sir, the issue is the alarming rise in the consumption of ultra-packaged food, what we commonly call the junk food, such as cold drinks, frozen fast food, etc., which are high on salt, sugar, unhealthy fat, but offer minimum nutrition. Sir, the WHO report of 2023 states that India's spending on the ultra-packaged foods skyrocketed from 900 million, so roughly 6,000 crore based on the conversion rate then, in 2006, to almost 38 billion in 2019, that is roughly 3 lakh crore, which is almost more than a 40 times increase in the consumption of fast food in a period of 13 years. Sir, we all know that excessive consumption of junk food, when combined with poor lifestyle, is one of the key reasons for the alarming increase in the non-communicable disease, NCDs, in our country, such as diabetes, obesity, cancer, respiratory cardiac diseases, and even long-term psychological disorders, sir. Sir, there's an ICMR report of 2022 which states that the report is titled India, Health of the Nation's States, which shows that NCD-related deaths in India rose from 37.9% in 1990 to 61.8% in 2016. Sir, this is the scenario that we are talking about. And the most worrisome part is that, sir, increasingly children are getting addicted to junk food because advertisements target the children and their impressionable minds. And, sir, 41% of our population is under 18, what we call children, 41% of our population. So, sir, you can imagine the health time bomb that we are staring at. Sir, the national assets of ours, what we call demographic dividend, can become a real, sir, danger to the nation. Our children will end up growing as unhealthy citizens.
And the second worrisome aspect is that, sir, the same companies, the same brands which sell better quality ingredients and food products in Western countries, particularly US and Europe, sell cheaper versions of those brands in India, which has huge consequences for our health, our citizens' health. They prioritize profit over the health of Indian citizens, taking advantage of our regulatory loopholes. Sir, we cannot stop anyone from buying anything. It is at the end of the day the consumer's choice. But at least they should make an informed choice, and the government should take enough measures to strengthen the regulation. So I will, sir, offer through you 4 suggestions, urge the government to take action. Sir, first, stricter FSSAI regulation by amending the FSSAI Act of 2006. Second is to consider the health tax on this junk food, the ultra packaged food. And third is, sir, to adopt mandatory front of pack labeling. Sir, if you compare 2 chocolates, one you buy in Geneva and one you buy in Delhi, you can clearly see how the font size is smaller of the ingredients in. धन्यवाद सुजीत कुमार जी। श्री संतोष कुमार पी, need to initiate comprehensive policies for the welfare of Indian expatriates in GCC countries. Thank you, Vice Chairman, sir. The Gulf Cooperative Council, GCC, consists of 6 countries in the Middle East. And we have a very huge Indian population living in these countries. 93,72,076 is the exact number as per the answer furnished in this August House in December last year. Now, sir, we need an urgent need of a comprehensive and pragmatic policy for this Pravasi community who are contributing immensely to strengthen the Indian economy. And out of these, 27% are from Kerala. Sir, there are lots of issues and concerns related to this Pravasi community. And I would like to point out some of the major issues. The first issue is related to the airfare. Sir, this airfare hike, especially during the season time, has become a menace to the Pravasi community. This has become a source of exploitation of this aviation companies. And unfortunately, so as to say, our aviation ministry has become a mute spectator to this exploitation. This issue was raised quite a number of times in this August House and other forums, but we are nowhere near to a solution. So I take this opportunity to urge through you, sir, to take necessary steps to control this airfare. Secondly, sir, suppose one dies in GCC countries. The mortal remains must be taken back to homeland. And for that, our Air India or Air Tata, whatever it is charging double than what Air Arabia charges. For example, Air Arabia charges 1,910 dinar, whereas our Air India charges double of that amount. Thirdly, sir, the ICWF, the Indian Community Welfare Fund, is a huge amount with the Indian embassies in these GCC countries, collecting various forms. The embassies are flooded with funds, but this is of no use, it's unused. And the Pravasi voting issue, we have to ensure that Pravasis can exercise franchise. So these are major concerns, and to address all these issues, we need a comprehensive, thorough policy which should be pragmatic as well. Thank you. धन्यवाद श्री संतोष कुमार पीजी। श्री बाबू भाई जयसिंह भाई देसाई, demand for construction of an overbridge at railway crossing number 143 in Banaskantha district of Gujarat. अनुपस्थित। श्री जोश के मणि concern over opening up the country's offshore sand blocks for mining by private entities. Thank you, sir. This is a serious concern for the state of Kerala, especially the coastal area of Kerala and also the nation.
So every legislation enacted or amended in this August House is especially for a huge capital investment project, is a deliberate and shameful attempt to prioritize corporate profit, forgetting the well-being of the people. During 2023, the Offshore Mineral Act was amended here. The motive behind the amendment was to allow private players into offshore mining. This has opened the doors for unchecked exploitation of marine resources and of the people. The Geological Survey of India has found about 745 million tons of sand near Kollam in Kerala, Kollam South, Kollam North, Alapi, Ponnani, Chavakkad. And surprisingly, the center has already invited tenders of mining across 242 square kilometers of Kollam coast. As we all know, whenever a huge capital investment, profit-making projects are auctioned, it goes to one or two companies we all know in the nation. Sir, we have discussed about the US administration deporting the Indian migrants to India. Now this government is going to deport 10 lakhs fishermen from the coastal area of Kollam. Sir, the venture is done without considering the state interest and the impact on the environment and the marine wealth. Moreover, not a single rupee is paid as royalty to the state government, nor to the fishermen to compensate. The full kitty goes to the sender. So in the tender prospect, it is stated that the Kollam coast block is described as rich in construction sand. But every baby in Kollam knows that it is not an ordinary sand, it is the sand rich in mineral and it is priceless. So the coastal line of Kerala is about 590 kilometers and more than 12 lakhs fishermen are there living in the coastal area. So Kerala has a deep mining will destroy the ecosystem. It will destroy the marine habit and the fish breeding and will have a devastating impact on the state seafood industry. So I have given a presentation or submission to see right for the fishermen. धन्यवाद जोश के मणि जी, धन्यवाद। 3 मिनट के बाद का अंकित नहीं होता है माननीय सदस्य। धन्यवाद जोश के मणि जी। श्री प्रदीप कुमार वर्मा, डिमांड टू इंक्लूड कुरनाली, मुंद्री, नागपुरी and whole language of Jharkhand in the 8th schedule of the Indian Constitution. श्री प्रदीप कुमार जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। झारखंड राज्य की कुड़माली, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा और हो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लेकर के मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय उपसभापति महोदय, 22 फरवरी 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। आज़ादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद्व में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड राज्य की समृद्ध भाषाई एवं सांस्कृतिक धरोहर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड में कुड़माली, खोरठा, मुंडारी, नागपुरी और हो जैसी महत्वपूर्ण भाषाएं बोली जाती हैं, जो न केवल लाखों लोगों की मातृभाषा है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान भी है। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन उलगुलान की भाषा भी मुंडारी थी, जिसकी अपनी समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यह भाषा मुंडा समुदाय की पहचान है
जिनका झारखंड के इतिहास और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हो भाषा सिंहभूम क्षेत्र में विशेष रूप से बोली जाती है और इसके बोलने वाले हो जनजाति के लोग बड़ी संख्या में हैं। इसी तरह कुड़माली भाषा का संबंध बंगाल एवं झारखंड के राढ़ सिविलाइजेशन से है। कुड़माली भाषा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुड़मी समुदाय द्वारा बोली जाती है। इसका साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। नागपुरी भाषा भी झारखंड की राजधानी सहित पूरे राज्य में व्यापक रूप से संवाद की मूल भाषा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत भी स्थानीय भाषाओं का स्कूली शिक्षा में प्रयोग व्यापक रूप से हो, ऐसा आग्रह किया गया है। इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल न किए जाने से इनका उस स्तर पर प्रयोग नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और शिक्षण में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कुड़माली, मुंडारी, खोरठा और हो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन, विकास एवं अध्ययन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष योजना और अनुदान प्रदान किए जाएं, जिनका इसका विकास हो सके। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद प्रदीप जी। श्रीमती दर्शना सिंह, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस and legislations for regulating AI generated deep fake videos। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आज मैं इस सदन में आपके माध्यम से डीप फेक तकनीक के बारे में अपनी बात रखना चाहती हूँ। महोदय, आज के युग में तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और तकनीक पर हमारी निर्भरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ तकनीक जहां हमारे जीवन को आसान बनाने में सहयोग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे कभी कभी कुछ गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। उपसभापति महोदय जी, कुछ लोग इस तकनीक का दुरुपयोग कर फर्जी जानकारी देकर समाज को नुकसान पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, जिससे कभी कभी लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। महोदय, आज इस डिजिटल युग में केंद्र की मोदी जी की सरकार हम सब की डिजिटल सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए सराहनीय काम भी कर रही है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई नई तकनीकी का विकास हो रहा है। इसमें डीप फेक भी एक तकनीक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज़ या हाव भाव को बदल देती है। महोदय, डीप फेक का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि इस तकनीक के नकारात्मक इस्तेमाल से न केवल व्यक्तिगत गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है, बल्कि इससे समाज में और भी कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। महोदय, डीप फेक का मतलब है एक व्यक्ति के चेहरे, आवाज़ या शरीर को किसी दूसरे व्यक्ति पर नकली तरीके से लगाना। यह तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके वीडियो और ऑडियो को इतना सटीक बना देती है कि असली और नकली में अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। महोदय, डीप फेक के नकारात्मक इस्तेमाल से कई सवाल उठते हैं, जैसे निजता की सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्षता। आजकल इंटरनेट और वैश्विक प्लेटफॉर्म की तेज़ी से बढ़ती तकनीक के कारण डीप फेक के नकारात्मक प्रभाव को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि डीप फेक तकनीकी के बिराजे। धन्यवाद। धन्यवाद बिराजे। धन्यवाद। श्री रामजीलाल सुमन, concern over the problems faced by potato farmers in country। श्री रामजीलाल जी सुमन। सभापति जी,
पूरे देश में आलू किसानों की हालत बहुत ख़राब है। 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो आगरा की जनसभा में उन्होंने आलू किसानों को आश्वस्त किया था कि जिस तरह गुजरात में बनासकांठा में हमने आलू प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की है, उसी तर्ज पर सरकार में आने के बाद हम आलू प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करेंगे। सभापति जी, आलू की लागत 1600 रुपया प्रति क्विंटल आती है और पिछली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो खरीद घोषित की वो 459 रुपया प्रति क्विंटल की। इससे ज़्यादा मजाक और दूसरा कोई हो नहीं सकता। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि आलू को उद्यान में शामिल किया जाता है, इसको हटा करके कृषि में शामिल किया जाए। सभापति जी, चीन में आलू बोर्ड है और चीन ये पहले से समझ लेता है कि कितने एकड़ में आलू की बुआई हुई है तो देश में कितना उत्पादन होगा, कितनी खपत होगी और कितना आलू खराब होगा। वहाँ सड़े आलू का भी इस्तेमाल होता है और वो थोड़ा गला आलू प्रसंस्करण में चला जाता है। सभापति महोदय, ये भी बहुत जरूरी है कि इसी तरह का बोर्ड हमारे देश में बनना चाहिए। मैं आपके मार्फत ये आग्रह करना चाहूँगा सभापति जी कि किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज नहीं मिलता। हमारे देश में जो अनुसंधान की व्यवस्था होनी चाहिए वो अनुसंधान की व्यवस्था नहीं है। आलू उत्पादन में हिंदुस्तान का तीसरा स्थान है और मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय कि आलू जो किसान उत्पादन करता आलू का, उसमें खाली 65% ही किसान अपनी फसल का मूल्य ले पाता है। हमारे देश में 35% आलू सड़ जाता है। तो मैं सभापति महोदय भारत सरकार से मांग करता हूं कि आलू को बागवानी से हटा करके खाद्य में शामिल किया जाए, कृषि में शामिल किया जाए। उच्च गुणवत्ता का बीज हमारे देश में उपलब्ध हो जिससे निर्यात हो सके। आलू अनुसंधान केंद्र खोले जाएं और चीन की तरह हमारे देश में भी आलू बोर्ड बनाया जाए तथा आलू प्रसंस्करण की व्यवस्था देश में की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुमन साहब। श्री अनिल कुमार यादव, मैदानदी, डिमांड टू इंक्लूड द मूसी रिवर in Hyderabad as part of the country's major river rejuvenation project. Thank you, Chairman sir, for allowing me to speak on demand to include Musi River in Hyderabad, Telangana under the central government scheme for rejuvenation of major rivers in the country. Sir, Musi नदी जिसे मुचकुंडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका इतिहास सदियों पुराना है। विकाराबाद के अनंतगिरी के पहाड़ों से शुरू होकर ये नदी हैदराबाद के दिल से गुजरते हुए नलगोंडा के मिर्यालागुड़ा में कृष्णा नदी में मिलता है। सर, मूसी नदी सदियों पुरानी नदी है जिसके तट पर हैदराबाद शहर निर्माण किया गया है। हैदराबाद का ऐतिहासिक चार मीनार भी इसी मूसी नदी के प्रांत में निर्माण किया गया है। आज से कई साल पहले मूसी नदी के द्वारा हैदराबाद शहर को पीने का पानी का व्यवस्था किया जाता था। कई हज़ार एकड़ पर किसान खेतीबाड़ी करते थे और हमारे मछुआरे भाई भी इसी नदी में अपना रोजी रोटी करते थे। लेकिन आज मूसी नदी का स्थिति ये है कि हैदराबाद शहर का जो पूरा कचरा है, हैदराबाद शहर का जो पूरा इंडस्ट्रियल केमिकल वाटर है, इसी मूसी नदी में डाला जा रहा है, जिसके कारण मूसी नदी आज एक नाले में तब्दील किया गया है। आज पूरे मूसी नदी के आसपास के जितने भी छोटे बस्ती है जो यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ इस मूसी नदी के कारण वो हर साल बीमार होते हैं। आज जिस तरह से मूसी नदी का जो हाल हुआ है, कहीं ना कहीं पिछले सरकारों ने इसके ऊपर लापरवाही किया है, जिसके चलते आज मूसी नदी एक बड़ा नाला के रूप में हैदराबाद में तब्दील किया गया है। आज हमारी मांग है, हमारे सरकार, कांग्रेस की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी बार बार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि मूसी नदी के लिए फंड्स अलोकेट किया जाए ताकि वो मूसी नदी को दोबारा पुनर्जन्म किया जाएगा। लेकिन आज कई बार रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी
केंद्र सरकार से किसी तरह का भी समर्थन हमारे सरकार को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हुए मूसी नदी को कोई वहाँ पे डेवलप करने का मौका नहीं मिल रहा है। जब भी वहाँ पे मूसी नदी का डेवलपमेंट का बात किया जाता है, सारे लोग उसमें प्रोटेस्ट करने के लिए बीजेपी के लोग सामने आके खड़े होते हैं। जब हैदराबाद शहर में इलेक्शंस होते हैं तो सारे बड़े नेता बीजेपी के वहाँ पे आके प्रचार करते हैं, लेकिन एक भी नेता वहाँ पे आके मूसी नदी के बारे में बात नहीं करता है। जो मूसी नदी हैदराबाद का दिल, हैदराबाद का रोजी रोटी था। आज हमारी मांग है केंद्र सरकार जल्द से जल्द मूसी नदी को भी यहाँ पे जो बजट के द्वारा पे उन्होंने समाप्त हो गया। माननीय सदस्य, धन्यवाद। श्री गोविंद भाई लालजी भाई धोलकिया, concern over the difficult situation arising due to recession in the diamond industry. निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गसन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। आदरणीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले आज गीता जयंती तो नहीं है, आज गीता जयंती नहीं है। धन्यवाद सर। 0 आवर पर बोलिए आप। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। महोदय, मैं गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत से आता हूं और जो कपड़े और डायमंड के लिए विश्व प्रसिद्ध है और वैश्विक स्तर पर डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है। विश्व के 10 हीरे में से 9 सूरत और गुजरात में बनाया जाता है। यह उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख रत्न कलाकार और अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करता है, लेकिन यह उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। लाखों रत्न कलाकार बेरोजगारी और वेतन कटौती झेल रहे हैं। उद्योग से जुड़े 2-3 लाख परिवार इस मंदी से प्रभावित है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गुजरात श्रम योगी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जो रत्न कलाकारों के स्वास्थ्य, बीमा, शिक्षा और भविष्य सुरक्षा की व्यवस्था करे। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ इन रत्न कलाकारों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। रत्न कलाकारों को प्रोफेशनल टैक्स से मुक्त किया जाए, उन्हें कम ब्याज दर पर लोन दिया जाए और आवासीय लोन पर ब्याज में रियायत दी जाए। संकट से उबरने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन की जाए। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पर त्वरित निर्णय लेकर आवश्यक कदम उठाए जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। विराज जी, धन्यवाद। श्रीमती JB Mathur Hisham, concerned over the rising use of narcotics, drugs among adolescents and young adults. Sir, thank you for the opportunity, sir. This is a grave concern in Kerala. The adolescent young boys and girls are dripping into the drugs very at higher level. And I wish to draw the attention of 3 instances which has actually shocked the entire conscience of Kerala. One was an incident on a New Year's Eve. A 14-year-old boy killed a 30-year-old man
when he was questioned on using drugs in public place. And the police also confirmed that the weapon belonged to the minor, which shows how the drugs have infiltrated to the deeper levels. Second instance was from Malappuram, where a son killed his own mother under drugs, and when police arrested, the boy smiled at the police, and that's a kind of the effect the drugs have in the youth. The third instance is a boy killed 3 members of a family from the neighborhood, again under the instance of drugs. So the escalation of drug-related crimes in Kerala is deeply concerning, and the number of cases under the narcotic drugs and psychotropic substances surged from 5,695 in 2021 to 26,619 in 2022, a nearly 5-fold increase. In 2002 alone, Kerala accounted for 27,545 drug-related arrests, representing 29.4% of India's total NDPS arrests. Recent data from the Kerala Police Department indicates that Ernakulam district alone recorded 8,567 narcotic cases from January 1st, 2023 to June 1st, 2024, the highest in the state. Overall, 41,531 cases were registered under the NDPS Act in the same period. Then NCB has further confirmed that high-intensity drugs like MDMA, LSD and cocaine are being trafficked into Kerala from international sources, worsening the crisis. A Kerala Excise Department survey indicates a sharp rise in drug demand among adolescents, further exposing the failure to control this menace. The Azad Foundation 2019 reported highlighted nationwide increase in drug addiction, with a UN report estimating 1 million registered heroin addicts in India, while unofficial figures suggest over 5 million. So this has to be, this gravity of the situation in the country and also in Kerala. समय समाप्त हुआ।